Namaskar dosto, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly endocrinologist, and you are watching Dr. KK's Med Talks, Mondays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 617वां 617th एपिसोड है. Let's have the headlines for the day. Now, a study says that shortness of breath could signal a heart attack, and this heart attack will have relatively less survival. तो अगर किसी को सांस चढ़ता है वो भी अचानक, तो एक बार जरूर अपना टेस्ट करवाएं. सबसे नजदीक वाले डॉक्टर के पास जाके एक ईसीजी जरूर करवाएं. डोंट इग्नोर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. In a new study, it has been shown that women are more likely to die after a heart attack as compared to men. And डरने की कोई बात नहीं है. All it means is कि यदि आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई या खून पतला करने की दवाई एस्पिरिन या स्टैटिन दिया गया है, तो you must take it. There are so many medicines which are available which can help prevent heart attack, and both men and women should take it. Alembic Pharma has got a green signal from the US FDA for its tablet lacosamide, which is indicated for the treatment of partial onset seizures in children aged 4 years and above. So another approval for an Indian pharma. In action mode, England has rolled out the 4th COVID vaccine dose for individuals over 75 years of age. इंडिया में हमारे पास 3 डोजेस की अप्रूवल है अभी. 2 doses and the third precautionary one. This is for age above 60, but England में 4th vaccine भी start हो गई है for those above 75. And something to be a bit scared of, in war-torn Ukraine, traces of polio virus have been found in the sewage system. तो पोलियो except for अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एक्सटिंक्ट हो चुका था पूरे वर्ल्ड में, बट अभी हाल ही में कुछ हफ्ते पहले मलावी इज इन साउथ अफ्रीका, वहाँ पे पोलियो पाया गया एक बच्ची में, and now they have found it in the sewage samples in Ukraine. So I just hope that this doesn't signal a resurgence of polio. But let's go to our topic for today and let's see what our topic is. हमारा टॉपिक है फर्टिलिटी इन मेन. बट ये टॉपिक सिर्फ मेन के लिए रेलेवेंट है, सिर्फ पुरुषों के लिए या सभी के लिए? लेट्स फाइंड आउट. एंड फॉर दिस वी हैव विद अस आवर गेस्ट डॉक्टर रजनीश मित्तल. नमस्ते सर. नमस्ते डॉक्टर रजनीश. डॉक्टर रजनीश एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, ट्रेन्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हार्मोनल डिजीज. ही हैज अ कीन इंटरेस्ट इन ट्रीटिंग डायबिटीज, ओबेसिटी एंड ऑल्सो सब फर्टिलिटी. ही रन्स एन एंडोक्राइन सेंटर and also an infertility center. And with his vast experience from across the country, including PGI Chandigarh, he currently serves the people in the twin cities of Jagadri and Yamunanagar in Haryana. Warm welcome, Dr. Mittal. Thank you, sir. Thank you very much. विनोद कुमार जी एंड अरुणा जी से आपको नमस्कार कर रहे हैं. एंड क्वेश्चन ये है कि वी अंडरस्टैंड व्हाट फर्टिलिटी मीन्स, वी अंडरस्टैंड व्हाट मेन मीन्स, बट आई ऑलवेज थॉट कि ये जब फर्टिलिटी का इशू आता है, जब बच्चे नहीं होते, बच्चे करने में मुश्किल आती है, तो लेडी डॉक्टर के पास जाना होता है, गायनी के पास, और जो महिला है, जो वाइफ है, उनको अपने टेस्ट कराने होते हैं. इज दिस पार्ट करेक्ट कि वाइफ को जाना है, महिला को जाना है टेस्ट कराने? इज दिस पार्ट करेक्ट? सर, सबसे पहले मैं आपको ग्रीट करना चाहूँगा अगेन. नमस्ते एंड शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया अपने साथ अपने कुछ भाव व्यक्त करने के लिए, शेयर करने के लिए. एंड all our audience who all have gathered here, I would really like to greet all of them here. And coming back to our question हमारा ये है, जो मुझे समझ में आया है आपसे, कि अगर सपोज करिए कि घर पर बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या हमें फीमेल को लेके गायनी के पास जाना चाहिए? Is that the right approach? So I think it is very quite an irony of our society, even in 2024, that still, though we claim that we are much advanced and we have traveled everywhere across the world and even outside Earth, and we are having all the nuclear weapons with us, but somewhere our mindset has not changed yet. We are still having orthodox mind. Let it be a very affluential background of someone or a poor background, or even educated, one of the most top-notch educated, including doctors, PhDs, or some corporates, or poorly or
illiterate persons. Everybody thinks कि अगर घर पर कोई infertility related issue है तो हमें भाई सबसे पहले फीमेल पार्टनर को दिखाना चाहिए, मोस्टली इसी में प्रॉब्लम होगी, और क्योंकि इसको प्रॉब्लम है फीमेल पार्टनर को दिखाना है तो हमें गायनी को दिखाना है. So at the same time, I would like to stress and say for our society that all of us have to consider that whenever there is an issue of infertility, male and female are equally to be checked. They have to be given equal importance. हो सकता है कि फीमेल पार्टनर नॉर्मल हो और मेल पार्टनर में प्रॉब्लम हो. कई मेल्स बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी अगेन they do not want to get in themselves investigated, they don't want to go to the doctors, they don't want to take the blame. They go on showing their wives to various gynecologists or doctors, considering that maybe that doctor is not able to understand her problem, because it's ultimately her who has to become pregnant, not me. So that thought process has to be changed in the society. इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम एक इनफर्टिलिटी को डिस्कस करते हैं साइंटिफिकली, अगर हम एविडेंस की तरफ देखें, so it's quite known that 35 to 40% of men factor or male factor is responsible for infertility. And out of those 35%, around 10% male factor is there with concurrent female party as well. तो यहाँ पर ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने अपने फीमेल पार्टनर को डॉक्टर के पास दिखाया है और फीमेल पार्टनर को प्रॉब्लम आई है, still that male has to get himself investigated because there might be a concurrent independent problem lying in the male as well, which should be investigated, because otherwise just attempting on a female factor becomes a futile attempt. So very strong message coming from Dr. Mittal. And Dr. Mittal, केदार जोशी जी हमारे सीनियर सुनने वाले हैं, सर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. सविता बुटानी नमस्ते सर. मैडम नमस्कार कर रही हैं. एंड डॉक्टर आर एस चौधरी, सर इज आवर सीनियर मोस्ट सर्जन फ्रॉम करनाल. सर आपको राइट गुड सर. इवनिंग करते हैं. एंड गुड ऑल्सो अ इवनिंग सर. सलाम फॉर यू फ्रॉम अफगानिस्तान फ्रॉम डॉक्टर नूर आगा दानिश. ही इज ऑल्सो ओके लॉग्ड इन. सर. सलाम सलाम सलाम. सो जो मैसेज आ रहा है डॉक्टर साहब से वो ये आ रहा है कि फर्टिलिटी का अगर इशू है, दैट इज नॉट एन इशू फॉर द लेडी अलोन. अकेले महिला के लिए नहीं है, वो कपल का इशू है. दोनों का इशू इकट्ठा है. मैंने इकट्ठा ठीक बोल दिया. नॉर्मली हम इकट्ठा बोलते हैं पंजाबी वाला. और जी डॉक्टर सर. मनीष धवन भी इकट्ठा बोलते हैं और डॉक्टर मनीष बटला भी इकट्ठा बोलते हैं. तो आज मैंने प्रॉपर वाली हिंदी बोल दी. सो इकट्ठे मिलके आई बेबी होप करना मेरी है. हिंदी ठीक आए आपके साथ, वरना मेरी तो पंजाबी ही आएगी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. देखते हैं क्या होता है. बट जब बेबी इकट्ठे करना है हमें, तो फिर टेस्ट भी इकट्ठे कराने पड़ेंगे. एंड बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है डॉक्टर साहब से दैट both partners, the male and female, both should get themselves tested. It is possible कि एक में issue आए, it is possible कि दोनों में आए, and around 40% जेंट्स में या हस्बैंड में दिक्कत आएगी आएगी. But Dr. Rajneesh, is this cause for despair or is it an opportunity to be dynamic to improve health? Definitely, sir. I think we could actually look at the positive aspect. I think here, suppose somebody has come up with infertility related issues and he lands up with the doctor to get himself checked that why am I having this issue, or my sperm count is less, or I am having nil count, or ABCD. There are so many causes for infertility. Definitely, there are a lot of things that are happening in health these days, especially the lifestyle diseases, जैसे कि डायबिटीज है, ओबेसिटी है, डिसलिपिडीमिया है. इनफैक्ट ओबेसिटी एंड डायबिटीज ये एक मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए. तो अगर किसी को इनफर्टिलिटी के लिए वो डॉक्टर्स को अप्रोच कर रहा है और डॉक्टर्स या क्लिनिशियंस उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन में दे रियलाइज और दे कम टू नो दैट दे आर डेफिनेटली हैविंग metabolic syndrome component, they are having dyslipidemia or dysglycemia, and of course a lot of men are obese these days, and obesity is really not considered as a disease even by many of the clinicians, unfortunately. So if we make a stress after making a basic investigations, and we try to conclude that probably the major issue that is causing his infertility is his bad lifestyle, obesity or uncontrolled diabetes. So I think it's a chance
for the gentleman to improve his health, to improve his life. Probably it gives a kick to him. uh, एक घर परिवार में बच्चे का पैदा होना, मैं समझता हूँ कि एक कपल के लिए, एक परिवार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने देखा है, आपने भी देखा है, हम सब ने देखा है, जो भी हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, कि बच्चा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वेदर इट इज़ फाइनेंशियली, सोशली, और लेट इट बी इट्स रिलेटेड टू देयर लाइफ़स्टाइल। So I think it's a big chance to become healthier. You are trying for something which actually in turn is giving you a very good health. और अगर आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि आपको आपके डॉक्टर बताएंगे कि प्रॉब्ली ये रीज़न है आपकी इनफर्टिलिटी का या आपके स्पर्म्स को अफेक्ट करने का, तो ये एक चांस है एक बेटर लाइफ के लिए, एक बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉट ओनली टू हैव अ चाइल्ड, but also to stay away from the consequences and complications later in life, which can eventually somebody develop from metabolic syndrome. Sir, I think शायद आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था. uh, हाँ, I यही don't था। know whether एंड I went off the track, or probably नो नो, यू this is what you एक्चुअली, wanted to ask. yeah, you've expanded the track. And what we are understanding is that fertility is one part of a man's health, overall health. Yes. जब हम fertility को address करते हैं, तो अकेले fertility की बात नहीं होती कि बेबी हो गया, but we are also addressing other aspects of health, metabolic health, diabetes, obesity. All these things will be screened for, all these things will be addressed, and overall health will improve. And like you've mentioned, not only physical health but emotional, social, psychological health also come into the picture. And in And Dr. fact, Rajneesh, in fact, I would say that this infertility is a consequence of metabolic syndrome. भाई ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो डायबिटीज़ के साथ डॉक्टर के पास जाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ जाए, या डिस्लिपिडीमिया के साथ जाए, या कोई एथेरोस्क्लेरोटिक इवेंट्स के साथ वो डॉक्टर के पास जाए। वो डॉक्टर के पास गया ही अपनी इनफर्टिलिटी को लेके है, व्हिच इज़ एक्चुअली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। metabolic syndrome. Let's talk about this in greater detail. And Dr. Rajneesh, Dr. Shubhlata Chatwal मैडम दिल्ली से, डॉक्टर जयदेव पाटिल आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं, एंड ऑल्सो गगन गुड ठाकुर जी से इवनिंग, गुड नमस्कार इवनिंग, आ रहा है। गुड इवनिंग, आपने नमस्कार। ये कहा क्या, इज दिस करेक्ट और इज दिस रॉन्ग? मेटाबॉलिक सिंड्रोम वी हैव डिस्कस्ड ऑन डॉक्टर के अग्रवाल्स मेड टॉक्स अर्लियर। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का की दूसरी परिभाषा लेते हैं, लेट अस टेक इट एज ओबेसिटी, ओवरवेट फॉर द टाइम बीइंग। इज दिस करेक्ट व्हाट आई हर्ड, कि अगर ओबेसिटी हो तो उससे आदमी की, पुरुष की स्पर्म काउंट कम हो जाती है, और उससे कपल की फर्टिलिटी कम हो जाती है? इज दिस करेक्ट? हैव आई अंडरस्टूड करेक्ट? Definitely. Yes, sir. Yes, sir. That is very true. Very true. And when we try to convince our patients, they just point blankly deny these facts. I mean, again, we fail as a society of doctors to make them understand that no, this is a major factor. They are like कि आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो कब से मोटा हूँ, कितने मोटे बंदों को ऐसे है वैसे है, it becomes difficult. But I think again, this is our onus to help them and to make them understand that no, actually, definitely obesity per se can cause infertility and oligospermia, and can reduce the sperm count, as you asked, to answer it directly. Very strong point. So we are talking of reasons for सबफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी इन मेन। हर इंसान में, हर व्यक्ति में, हर इंडिविजुअल में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, हर एक में मेल हार्मोन भी होते हैं, फीमेल हार्मोन भी होते हैं। सो देर आर मेल एंड फीमेल हार्मोन्स इन एवरी इंडिविजुअल। किसी में कोई ज्यादा होगा, किसी में कोई। बट जब ये मेल हार्मोन चर्बी में से निकलते हैं, व्हेन दीज मेल हार्मोन्स पास थ्रू फैट, एंड इफ यू आर ओबीज देन देयर विल बी मोर फैट, वहां पे ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो मेल हार्मोन को तोड़ के फीमेल हार्मोन बना देते हैं। तो इसलिए वो बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड डॉक्टर रजनीश, वुड यू लाइक टू टेक दिस फर्दर, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस? सो perhaps if you could So, explain in English first what happens in an obese male. right, sir. Right. So basically, what happens is that actually the concentration of testosterone reduces because of increased fat. There is increase in sex hormone binding globulin. So when there is a change in the sex hormone binding globulin, this globulin basically binds to the sex hormones like testosterone, as in men's case we are talking. So once there is a change, there is an increase in sex hormone binding globulins, definitely more amount of testosterone gets bound to that
SHBG globulin. So less of the free testosterone or the active form of testosterone, we can say, becomes available for intratesticular effects of spermatogenesis. And when lesser amount of free testosterone is available, definitely the concentration reduces in the blood as well as in the testes, and which reduces the spermatogenesis. So patient lands up with the oligospermia, or less sperm count, as we can say in a simpler language. Another thing is that, as you rightly said, that there are because of increased fat, the aromatase, that is the name of enzyme is aromatase, its activity increases in increased fat, so that testosterone gets more converted to estradiol. As sir said, that all of us, whether we are men or women, both of us are having both hormones, that is male hormone testosterone, female hormone estrogen or estradiol, we can say. Like there are three forms: isoforms, active form, inactive form. Let's not go dig into that detail. And then there is a disbalance, actually there is a disbalance of the ratio. Males में testosterone ज़्यादा होना चाहिए, estrogen कम होना चाहिए, and it's the other way around in females. But in males, when they are obese and then when there is a more peripheral aromatization, it becomes available and it gets more converted into estradiol. तो पहले तो SHBG बढ़ गया, टेस्टोस्टेरॉन, टोटल टेस्टोस्टेरॉन तो बढ़ गया, लेकिन फ्री टेस्टोस्टेरॉन जो कि हमारा एक्टिव था वो हमारा कम हो गया, which reduces the spermatogenesis. And in turn, in periphery, we जो बचा खुचा था, some amount of that also is getting to converted to estradiol. So ultimately, these effects actually lead on to subfertility. They reduce to the testosterone to such a critical level that we are unable to, increase sperm count. And important thing that has to be kept in mind is that when we specially investigate these gentlemen, their testosterone levels will come normal, because more or less we are doing total testosterone in these gentlemen. Of course, we can calculate free testosterone levels, and again discussion goes to our another angle. But in routine, all labs, all of us, the first prime investigation is testosterone. So mere having a normal testosterone in an obese patient again does not tell us that whether this guy is having any obesity related subfertility because of reduced free testosterone availability. I hope I'm clear. That makes sense. And Geeta Agarwal ji, Dr. K.M. Prasanna Kumar, Dr. Ramesh Pal Singh Pawar sir, and Girja Shankar ji. अब क्वेश्चन आ रहा है कि you said that obesity reduces fertility. तो ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती कि ओबेसिटी से ये हो सकता है। एंड इंडिविजुअल आदमी वो तो अपनी तौहीन समझता है कि आपने मुझे कह कैसे दिया। एक्चुअली द पेशेंट्स गेट वेरी अपसेट विद अस। Yeah, सच भी बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट एंड सरल तरीके में बोलते हैं, इन अ वेरी सॉफ्ट एंड सिंपल मैनर, बट द पीपल यूजुअली टेक इट एज एन इंसल्ट टू मैनहुड, टू मैस्कुलिनिटी, and true. sometimes we get on the receiving end of that conversation. But the question is there a solution for this? अगर मैं अपना वेट कम करता हूँ फिर क्या होगा? डेफिनेटली। तो हम अब दोबारा पैथोफिजियोलॉजी में चले जाएंगे। जो मोटापे के साथ हो रहा था, एसएचबीजी बढ़ रहा था, टेस्टोस्टेरोन उसके साथ बाउंड हो रहा था, फ्री टेस्टोस्टेरोन कम रह रहा था। तो जैसे ही हम वेट लूज करेंगे, हमारा जो एसएचबीजी है वो गिर जाएगा। एसएचबीजी गिर जाएगा तो वो टेस्टोस्टेरोन को बाउंड ही नहीं कर पाएगा। वो उतना ही बाउंड कर पाएगा जितना उसको करना है या जितना उसका है। तो जब वो बाउंड कम होगा तो फ्री टेस्टोस्टेरोन विल बी मोर अवेलेबल। So when free testosterone is more available, a more amount of free testosterone enters the testes. So that is intratesticular testosterone is more available for seminiferous tubules. Sufficient testosterone when becomes available for seminiferous tubules, then spermatogenesis starts, and there can be a really a drastic change in sperm counts of the individual. तो डेफिनेटली वेट लॉस एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है उन पेशेंट्स का, उन मेल इनफर्टाइल सब फर्टाइल पेशेंट्स का, जिनको हमने थॉरोली इन्वेस्टिगेट कर लिया है, और देर इज नो क्लियर कट प्राइमरली एंडोक्राइन डिसऑर्डर, and they are obese, they are having metabolic syndrome. And if we do the hormonal profile,
normal LH-FSH and normal testosterone, and obese gentleman, other things normal, no other telltale signs of other endocrine diseases, and no other things like we check in history, तो आप इजीली पेशेंट को वेट लॉस के लिए काउंसिल करके उसका वेट लॉस करवा के वी कैन सी इवेंचुअली चेंजेस एंड what can be done as you asked. I think more and more maybe we need to come out with some awareness programs, and media can take a lead. And I think media, say paper printing, say a lot of education material, social medias, something like this, whether we are from a medical background or from a non-medical background, so more awareness can come up from societies and individuals. सो दैट इज एक्चुअली द एम ऑफ डॉक्टर के अग्रवाल मेट टॉक शो, कि हम Definitely, sir. अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करें। एंड Hmm. जब आप सिर्फ किसी इंडिविजुअल से बात करें, मुझे भी गुस्सा चढ़ जाएगा अगर सडनली कोई डॉक्टर मुझे अजीब सी चीज बता दे। बट अगर उस इंडिविजुअल को ना टारगेट करें, हम पूरी कम्युनिटी को टारगेट करें एंड वी आस्क फॉर वेट लॉस एट अ कम्युनिटी लेवल, एट अ कंट्री लेवल, दैट माइट इम्प्रूव थिंग्स। एंड दैट वेट लॉस कैन बी डन through lifestyle. It can also be done through medicines. Medicines we have available. But two more questions. Let's take Dr. Noor Aga's question first. So you said, Dr. Rajneesh, that obesity is linked with subfertility in men. You explained why it is so, and you have said that the treatment of choice is weight loss, क्योंकि जो subfertility है वो weight की वजह से ही तो हो रही है। But अब डॉक्टर नूर आगा पूछ रहे हैं, obese gentlemen with oligospermia, normal testosterone, is there any advantage of giving testosterone capsules or gels or injections? No, not at all. Not at all. See, when we have normal testosterone for the individual, definitely the exogenous testosterone acts as a contraceptive for that person. And second thing, even suppose the testosterone was subnormal or low for that gentleman, in his case also, direct testosterone cannot lead on to spermatogenesis, because we are increasing blood levels of testosterone, we are not increasing intratesticular levels of testosterone. It is very important for us to understand that for spermatogenesis to occur, we have to really stimulate seminiferous tubules, and seminiferous tubules can get stimulus from Leydig cells. And Leydig cells have to secrete the testosterone, which can actually give a stimulus to seminiferous tubules to secrete the spermatids and the growth for spermatids, and we can have mature spermatogenesis eventually. But exogenous testosterone invariably either acts as a uh, contraceptive for that gentleman, and second thing is that it does not increase the intertesticular testosterone. But we can use a drug, of course it's a off label drug. If we have to discuss one point further, letrozole, like we know that we use this drug especially in obese patients who have metabolic syndrome related uh, hypogonadism. It's a actually kind of a secondary hypogonadism at the hypothalamic level. That is what we can explain in a scientific way, that how the hypogonadism is happening in obese patients. So of course we know that letrozole blocks the receptors over there, and it tries to increase the other hormones like the pituitary hormone, that is FSH, LH, which in turn try to stimulate our gonads, that is Leydig cell and seminiferous tubules, and then we can have increase in spermatogenesis. So this question coming up from many people, from Dr. Shubhlata, Dr. Noor Payal Sharma ji, and let's take it one by one. Question is, how do we increase sperm count in oligospermia? So Dr. Rajneesh, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। What is sperm count? ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। And how do I know whether my patient has given the right sample in the right manner? तो सबसे पहले तो टेस्ट करेंगे ना, टू मेक श्योर कि हमने डायग्नोसिस भी ठीक किया है कि नहीं। तो हाउ डू वी डू अ स्पर्म टेस्ट? व्हाट डू वी टेल द जेंटलमैन? Right, sir. So basic thing that we need to understand is that कभी भी हमने एक sperm sample पे या एक semen analysis पे we don't have to jump that this gentleman is having oligospermia. Main thing is that कि जो counts हैं they keep varying. We need to understand that at least we should have minimum 2 reports at the gap of 1 week to really say that this patient is having oligospermia.
जनरली जो हमारे स्पर्म काउंट है, जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है, जैसा कि आपने पूछा या बताया, दैट इज डिपिक्टेड एज पर द डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड्स। डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड्स ने पूरी रिसर्च के बाद दे 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 उन्होंने एक चार्ट दिया है कि भाई ये 5% से लेके 95% तक की जो पॉपुलेशन है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन अगर हम कंसीडर करें, तो उन्होंने उसका डाटा बनाया, उनका स्पर्म काउंट देखा, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, वाइटैलिटी देखी, मोटिलिटी देखी, एंड लॉट ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव टू बी सीन इन semen analysis or the sperm structure, if I say. Then they developed a criteria. They said that if a person is having within 95 to 5%, then he is normal. तो अगर हम आप लीस्ट की बात करें, जो आपने नॉर्मल काउंट की बात करी, तो दे सेड दैट एट लीस्ट पेशेंट शुड हैव more than 15 million per ml of sperms to say that this gentleman is normal. But if per ml is less than 10 ml or 15 ml, we can say oligo. And then they further divided oligo into, mild, moderate and severe. 15 से 10 के बीच में mild है, 10 के बीच और 5 से ज़्यादा है तो वो moderate है. And if it is severe oligospermia, the count is less than 5. While we are evaluating a patient of severe oligospermia, like less than 5 ml of 5 5 million, I million. mean, count, sorry, 5 million of count, we generally evaluate them on lines of azoospermia. We almost consider them to be azoospermic. So we have to start thinking that probably, because what is the end result? End outcome, what does that patient want? Patient does not want to improve his count, patient wants a child. So we generally approach severe oligos just like we would have had approached azoospermic patients when it comes to addressing infertility, not addressing their problem, but addressing infertility. So I think sir आपने शायद यही पूछा था कि हम ओलिगो को कैसे डिफाइन करते तो हैं. ये ऑलिगो हो गया. बट सपोजिंग अ जेंटलमैन कम्स टू आवर ओपीडी एंड वी हैव टू टेल हिम कि आप सैंपल दो, कैन वी टेक अ सैंपल Oh, एनी I'm टाइम, sorry. और डू Okay, वी I'm हैव टू sorry. आस्क फॉर सम हिस्ट्री, व्हाट डू वी हैव Right, टू right, right, एडवाइस? right. Yes, yes. That was the second question you asked. So basically, it is very important that we need a abstinence of minimum around, 2 to 7 days abstinence is recommended ideally. And patient, if has abstinence of around more than 2 days or 3 days or so, then we can take a sample, and that sample should be ideally collected in the hospital premises itself, and patient can give by masturbation technique he can give, or he can take a help of his partner to give the sample of the semen. And it is very important that when he gives a sample of semen, the doctor who has to analyze should be there in the lab at that point of time. This is very important because I see that many a times random patients goes to the lab, वो सैंपल दे के आ जाता है, वहाँ पे टेक्नीशियन रहता है, वो उसको लिक्विफेक्शन के लिए ऐसे ही छोड़ देता है कि पहले ये लिक्विफाई होगा. And then the time passes by more than 30 minutes, then 1 hour, 2 hour, and doctor is coming after 3 hours, who has to actually analyze the sperm count, and by then actually lot of picture has changed. So I would advise that there should be abstinence of around 2 to 7 days only, not less than 2 days and not beyond 7 days. And patient has to give sample in the premises itself, and doctor should be around. Sample should be examined within 30 to 40 or 45 minutes of giving the sample, and that sample has to be repeated at least with a gap of 7 days to really conclude that what exactly is the picture of the patient. तो अगर हमने सैंपल ठीक ले लिया और उसमें हमें एक बार नहीं 2 बार ओलिगोस्पर्मिया दिख गया, तो हमें मैनेज करना है. अब वही जी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ डू वी मैनेज, एंड यू यूज्ड लेट्रोजोल, सो दैट इज वन drug which actually modulates our hormones. Question is, जी any nutraceuticals that we can use? Dr. Shubhlata madam पूछ रही हैं coenzyme Q. So coenzyme Q, carnitine, what is the role of these nutraceuticals? जी जी. जैसा कि आपने कहा कि अगर किसी पेशेंट को ओलिगोस्पर्मिया है, तो मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज वी शुड इन्वेस्टिगेट दैट पेशेंट व्हाई ही इज हैविंग ओलिगोस्पर्मिया. सो वी हैव टू लुक एट द एंडोक्राइन कॉजेस, व्हिच ऑफ कोर्स मे बी वी कैन डिस्कस, एंड इट अगेन इट्स अ
long discussion and long list of endocrine diseases that we have to look at why this gentleman might be having endocrine issue related to oligospermia. सपोज कीजिए कि आपने उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया और उस इन्वेस्टिगेशंस में आपको कुछ भी नहीं मिला एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड फॉर दैट मैटर even his BMI is normal and you are not able to actually say that whether this gentleman is having even MOSH or metabolic syndrome related hypogonadism, secondary hypogonadism. जहाँ तक then we are left with nutraceuticals, as madam has asked. When we look at science, when we look at evidence, evidence definitely says that coenzyme Q has a big role to play. But I think in my experience, even sir आप भी share कर सकते हैं इस experience को. Nowhere in the guidelines or books there are any recommendations that you prescribe coenzyme Qs or nutraceuticals for improving the sperm count of the patient. But there are n number of evidences in science which actually shows the trials done with the use of coenzyme Q, because ultimately जो oligospermia है उसको देखा गया है कि antioxidants या free radicals, that they are the things that are destroying the sperm counts. तो इनका जो रोल है देखा गया है कि if we try to focus on those antioxidants, if we can actually take care of those antioxidants or free radicals, I mean to say, then definitely, probably, theoretically or hypothetically, there might be some improvement in the sperm. I think another thing is, or the another problem is that the concentration that is required for coenzyme Q or astaxanthin like derivatives for improving the count is sky high. Like we need a very big concentration to actually bring a change to the sperm count. And the available preparations in the market, they are not having therapeutic dosages of coenzyme Q or the astaxanthins. So that is another problem, that to have a therapeutic effect, we need a high concentration, and we do not have preparation with that high concentrations. And even if we have one or two, and maybe we can use them once or twice a day, they are so costly that patient find it very tough to use such drugs. That's all I think regarding this. आपका क्या sir experience है, or maybe what is your input from your Exactly side? the same. So Dr. Noor continues with this discussion and he says role of zinc, vitamins, coenzyme Q, carnitine. So like Dr. Rajneesha said, they are sperm energizers. The Sure. sperm is a small cell which has a very big mitochondrion. It needs a lot of power, a lot of energy. That is why it has a very strong Nutrition. It mitochondria. acts as a nutrition actually. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर होता है सेल का और वो पुश करता है स्पर्म को टू टू स्विम. जो स्पर्म मोटाइल होगा ज्यादा चांसेस होंगे प्रेगनेंसी होने के. अगर आप उस स्पर्म को मोटाइल रखना चाहें तो यू हैव टू गिव एनर्जी एंड दीज एनर्जाइजर्स लाइक कोएंजाइम क्यू, carnitine, arginine also and zinc, they all help. They also help by working as antioxidants. क्योंकि स्पर्म अगर बूढ़ा हो जाएगा जल्दी, एंड वो बूढ़ा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑल आवर रॉन्ग लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम. अगर वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो दौड़ नहीं पाएगा, चुस्ती से स्विम नहीं कर पाएगा. सो देयरफॉर we can use these drugs, but they will be adjuvants at best. They will not be the primary therapy. We Yes, have sir. more questions coming up, and Dr. Chetwal also points out that coenzyme Q is quite expensive. Arginine is also expensive. Arginine is a vasodilator, but it does help. Like arginine will help in vascular defect, vascular deficit, maybe someone with sexual issues, sexual disorders, as opposed to fertility Like disorders. diabetics, like diabetics. But the cost is high, so we should be aware of that. There are more questions coming up, and let me put things in perspective before we take all these questions one by one. तो जो causes होते हैं सब fertility के, how do we classify them? Finally, जो testes है हमारे, उन्होंने काम करना है, उन्होंने sperm बनाना है. तो infertility क्यों हो सकती है सब fertility? या तो testes में कोई दिक्कत है. जैसे आप you imagine a factory, factory में वर्कर का काम है सामान बनाना. तो या तो testes में गड़बड़ है. There are no cells which are making testosterone, or the cells are not working. It is also possible कि testes ठीक है, but जो master है, जो supervisor है, वो काम नहीं कर रहे. That is the pituitary gland, master gland है brain में.
तो वो सेकंड पार्ट हो गया इनफर्टिलिटी का। तो या तो टेस्टिस काम नहीं कर रहे या मास्टर ग्लैंड काम नहीं कर रहा। इट इज पॉसिबल कि दोनों ही काम कर रहे हैं। तो हमने फैक्ट्री चलाई, हमने खूब सारा सामान बना दिया, पर बाहर चक्का जाम है, रास्ता ही बंद है। तो हम निकालेंगे कैसे टेस्टिस को, सामान कैसे बेचेंगे? सो द पिट्यूटरी माइट बी नॉर्मल, the testes might be normal, but there might be a blockage in the tubes which bring out the semen, the sperm. तो ब्लॉकेज की वजह से एज़ोस्पर्मी आ रहा है। तो उसके अलग टेस्ट होते हैं। एक सिंपल सीमन फ्रक्टोज टेस्ट होता है विच इज द सिंपलेस्ट, एंड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर। चौथा ये है कि जो सबसे कॉमन है जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे, वो था कि मास्टर भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, काम कर रहा है, ब्लॉकेज भी कोई नहीं है, पर वातावरण ही खराब है पूरी बॉडी का। देयर इज अ सिस्टेमिक डिसऑर्डर, मे बी लिवर खराब है, या हार्ट फेलियर है, या किडनी खराब है, या मोटापा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब जब ये सब चीजें होंगी, लिवर, किडनी, हार्ट खराब होगा या ओवरवेट होंगे, तो सारी बॉडी का वातावरण खराब हो जाएगा। बॉडी विल डाइवर्ट रिसोर्सेज फ्रॉम स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म तो अगली जनरेशन के लिए बन रहे हैं, तो बॉडी विल से पहले मैं अपना ख्याल रखूं, इट विल डाइवर्ट ऑल दैट एनर्जी टू टेक केयर ऑफ इट्स लिवर और किडनी। तो अब ये चार चीजें हैं, एक एक करके लेते हैं। So a question coming is, you've talked about these systemic disorders, and you've told us that weight loss is important. No need to give testosterone. We can give nutraceuticals if we want. But let's go to the testes now. And Payal Sharma ji पूछ रही हैं, what are the reasons why there is azoospermia? Even in someone who is not obese, who doesn't have any pituitary problem, ऐसी क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं टेस्टिस में? आई थिंक सर काफ़ी कुछ आपने इस क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हैं, और शायद इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी कैन अगेन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो एज़ोस्पर्मिया का मतलब है कि इजैकुलेट में स्पर्म्स नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा, इजैकुलेट में स्पर्म नहीं आ रहे हैं, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो बन ही नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं, और अगर वो बन रहे हैं, तो आपने कहा रास्ता बंद है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे हैं। So that means obstructive versus non-obstructive. That is one thing. So if there is a obstruction, then obviously it has to be somewhere in the ejaculatory duct. And many a times a simple test, like you said, the presence of fructose in the semen examination helps us decide whether there is a obstruction or no. However, still there can be some obstruction even if there is some fructose present in the sperm. किसी भी लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कई बार तो रास्ता बंद होता है, कई बार रास्ता बंद नहीं होता, ट्रैक ही एब्सेंट होता है, जैसे कि हमारा वास डेफरेंस हो गया, एपिडिडिमस हो गया। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, and there might be a bilateral vas deferens absence basically, जिसमें CFT या some gene mutations happens जिसकी वजह से ये एब्सेंट हो जाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस में ही हम बात कर रहे हैं। जब ये एब्सेंट हो जाते हैं तो वो रास्ता बना ही नहीं होता। जब वो रास्ता ही नहीं बनता तो वो बाहर कैसे निकलेंगे? इट इज नॉट इवन ऑब्स्ट्रक्शन, इट्स ए बेसिकली यू कैन से कि क्लोज, वो सड़क ही क्लोज्ड है, सड़क बन ही नहीं पाई जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाते। तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन के अंडर ही क्लासिफाई की गई है। व्हेन वी टॉक ऑफ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, दैट मीन्स कि रास्ता तो हमारा खुला है, रास्ता बना भी हुआ है, रास्ता खुला भी है। या तो प्रॉब्लम टेस्टिस के लेवल पे है कि वो स्पर्म बना नहीं रही, या जो प्रॉब्लम है वो ऊपर के लेवल पे है, जो कि आपने कहा पिट्यूटरी के लेवल पर या हाइपोथैलेमस के लेवल पे। So ultimately, either there are a lot of signals totally active, you can say hypothalamic pituitary axis is actively working, but testis is not functioning properly, or testis wants to function, but ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं कि ऊपर से हम काम नहीं करेंगे। मैं हमेशा, जैसे कि आपने भी एग्जांपल दी, मैं हमेशा इसको एक स्कूल की तरह ट्रीट करता हूँ, एंड आई ऑलवेज टेल दैट हाइपोथैलेमस इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, and pituitary or hormones, whatever, like LH and FSH in this context, are the teachers of the school, and testes or testosterone are the students of the school. तो बच्चे तो तभी काम करेंगे अगर टीचर स्ट्रिक्ट है, टीचर तभी काम करेगी अगर प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट है। ये एक रूल है, ये एक दस्तूर है। लेकिन कई बारी बच्चे अच्छे होते हैं, टीचर अच्छी नहीं होती, कई बार टीचर अच्छे होते हैं, प्रिंसिपल अच्छा नहीं होता, कई बार प्रिंसिपल अच्छा होता है, बच्चा अच्छा नहीं होता। So this is how we can explain that how there can be discordance between all the three, that is hypothalamus, pituitary
एंड टेस्टिस। तो इसको हम दो भाग में बांटते हैं। वन वी टेल इट एज hypergonadotropic hypogonadism in our medical term. When we use this word as hypergonadotropic, that means the problem is with the testes. It's a local problem. That local problem can be genetic, gene defect हो गया, receptor defect हो गया, या seminiferous tubule नहीं बन सके, या Leydig cells नहीं बन सके, या कोई इन्फेक्शन हो गई बचपन में, लाइक मम्प्स हो गया, ऑर्काइटिस हो गया, smallpox हो गया, chicken pox हो गया. There are a lot of infections, viral infections that can cause orchitis, and then because of that orchitis or that disease in the early childhood, the seminiferous tubules got destroyed, and eventually they could never be revived, and patient की testes destroy हो गई. या थर्ड, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या बचपन में कोई जोर से बॉल लग गई, सम चोट लग गई, दैट कैन बी अनदर कॉज. वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल कॉजेज, कि कैसे टेस्टिस इफेक्ट हो सकती है, जीन से हो सकती है, इन्फेक्शन से हो सकती है, चोट लगने से हो सकती है, या उसको हमने कोई ऐसी ड्रग्स दी जिसकी वजह से टेस्टिस अफेक्ट हो सकती है. स्पेशली there are a lot of chemotherapies actually that are given, and those chemotherapies can destroy the testes. देन पांचवा हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, लाइक पेस्टिसाइड्स, डीडीटीज, बेंजोल्स. जो ये चीजें हैं, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा टोटल सिस्टम खराब कर रहे हैं, वेदर इट्स ए एंडोक्राइन सिस्टम or any non-endocrine system. So we have a lot of diseases that where whose numbers have soared up because of these endocrine disruptors or these pesticides which are causing the problems. Then, of course, when we go up, that is pituitary and hypothalamic cause. Of course, pituitary में कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है, कोई पिट्यूटरी के कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक रेथ के स्क्लेप्सिस हो सकती है, क्रेनियोफ्रेंजियोमास हो सकते हैं, जर्मिनोमास हो सकते हैं हाइपोथैलेमस में, और वी कैन हैव इवन सम स्ट्रोमल सेक्स कॉर्ड tumors can be there, which can affect, in fact it can affect testes as well as their hypothalamus level also it can affect. So practically, in nutshell, I would say that any problem anywhere in these lines, we can have issues with sperm production. And a very commonly treated problem, which has nothing to do with these three. There are some endocrine diseases which can indirectly affect sperm count, and if we treat those endocrine diseases, sperm counts can be taken care of. And most commonly seen in daily OPDs is hypothyroidism and hyperthyroidism. Quite well known issues, quite well known hormonal issues. If we treat hypothyroidism, if we treat hyperthyroidism, it indirectly takes care of the sperm counts as well. Similarly, Cushing's disease, as we know, can cause subfertility to the patients. And other like prolactinomas, we know they can also cause subfertility to the patient. So one by one, in nutshell, I can say that कि आप कोई भी हार्मोनल इशू अगर पिट्यूटरी में क्रिएट करेंगे, whether it is linked with FSH and LH or it is not linked with FSH and LH, इवन इन्फेक्शंस हो जाती हैं हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी ग्लैंड में, लाइक वी हैव lymphocytic hypophysitis, granulomatous diseases. So it's endless discussion, I think, which can actually cause, or systemic diseases, जैसा कि आपने कहा. Very important point that I would like to highlight is, which actually often gets missed, especially in our part of India, that is in Punjab or Haryana. We see a lot of thalassemia patients also, and or there might be histories of multiple blood transfusions in young childhood and in early childhood, because of which the ferritin increases, and that ferritin can actually get deposited in our pituitary gland or in that region, where it can cause hypopituitarism. So eventually that hypopituitarism goes unnoticed over years, and many times these patients present in the OPDs with infertility. So I mean, whatever cause you can think that can affect our hypothalamus or pituitary, that can invariably lead on to reduced sperm count or oligospermia or azoospermia. In fact, it's a long discussion, and we So, can take but this answers the question जो पायल जी ने पूछा था. उनका क्वेश्चन है, तो पायल जी आपका क्वेश्चन दो हिस्सों में लेते हैं. आपका क्वेश्चन था, इज देयर एनी चांस फॉर अ पेशेंट टू कंसीव आफ्टर नील काउंट?
any treatment for them apart from IVF? तो इसका आंसर डॉक्टर साहब ने बता दिया that you have to find the cause, and causes की लिस्ट लंबी है. So we look at the hypothalamus, the pituitary. We also look at other endocrine diseases like diabetes, obesity, and thyroid disease, and so many things. अब थैलासीमिया आ गया बीच में, so we have to rule out all these. बट आप ही के क्वेश्चन को वापस रिफ्रेश करते हैं. सपोजिंग पूरा वर्कअप हो चुका है डॉक्टर रजनीश, तो सर। हमने हार्मोनल टेस्ट किए, सब नॉर्मल है, बॉडी वेट भी नॉर्मल है, और फिर एक एफएनएसी टेस्टिस हुआ, फाइन नीडल सर। एस्पिरेशन साइटोलॉजी. फाइन सर। नीडल पतली पतली सी सुई डाल के पुरुष के टेस्टिस में उन्होंने पानी निकाला और देखा, तो उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो स्पर्म बनने की जो सेल्स हैं, स्पर्म बनाने की सेल्स, वो बनी ही नहीं हुई. दैट इज अ डेवलपमेंटल डिफेक्ट. राइट सर। तो राइट सर। ऐसे में what does the IVF center offer us? What are the different options that we have? सर, अगर जिस प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं, दैट बिकम्स टोली सेल ओनली सिंड्रोम बेसिकली. Even up now the thing is that we actually hardly expect that there is any seminiferous tubule present in that testes, and when there are no seminiferous tubules present in those testes, ideally there will not be any spermatids. If there are no spermatids, then there will not be any mature spermatozoa. But it has been seen in many studies, in especially there are European studies from many IVF centers, where they have done TISA they have done. Basically, they extract the testes, they dissect the testes, and they keep a microscope on the table itself, that is called micro TC. They try to look at the fine pockets inside the testes, and they actually search for healthy spermatozoa. And those isolated pockets might be seen in patients with the Sertoli cell only syndrome, and even Klinefelters, I would say. Like, we have seen Klinefelters generally, of course, it depends on the testicular size. But if suppose a Klinefelter's testicular size is around at least 4 ml or more than 4 ml, it will be really prudent to go ahead with micro TC of such people, including the one you asked, where we can look for a healthy spermatozoa, and if that is present, then ICSI can be offered to those patients at that point of time. And yes, patients have definitely conceived, and they have fathered a child with the background diagnosis of Klinefelter's or Sertoli cell only syndrome. That's the only way we can help them. So IVF तो हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. पायल जी, डॉक्टर रजनीश को रिक्वेस्ट करते हैं टू टेल अस द नेम्स इन फुल, so that you can speak with your doctor and see if there is a feasibility or if there is a possibility of doing these ICSI and TISA. So, Dr. Saab, can you just tell us the full forms and tell us how these are different from IVF? मोटी सर जो बात है, जो समझने वाली यहाँ पर बात है, अगर हम आईवीएफ किसी को भी कहते हैं, तो आईवीएफ का मतलब है कि भाई हमने स्पर्म लिया और हमने ओवा के साथ उसको छोड़ दिया, उसको जोड़ा नहीं हमने. सो व्हाट वी डू इज वी टेक अ पेट्री डिश, हम पेशेंट का इजैकुलेट लेते हैं, and in that ejaculate we try to separate healthy sperms which are very well made out in a routine sperm examination. Healthy sperm as in उसकी भागने की स्पीड कैसी है, उसकी टेल कैसी है, वेयर वी कैन जज, आवर आईज गेट ट्यून टू अ हेल्दी स्पर्म की हेल्दी कैसा उसका वो है, एंड दैट यू लीव विद द ओवम. आप एक ओवम एक पेट्री डिश में डालते हैं, उसमें आप उसको छोड़ देते हैं. इसी प्रकार यू मेक मल्टीपल डिशेस, लाइक यू हैव डन ओवम पिकअप, you have some 8 or 10 eggs, and you plan to do for all. Of course, you are not going ahead with the frozen ovum thing, एंड देन आप उसका आईवीएफ करते हैं. इसका मतलब आपने स्पर्म को उसकी किस्मत पे छोड़ दिया कि भाई तेने मिलना है तो तू उससे मिल ले, एंड वी आर ट्राइंग टू गिव यू अ गुड एटमॉस्फेयर आर्टिफिशियली. इक्सी में क्या है, दैट इज बेसिकली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इनोकुलेशन ऑफ द स्पर्म. उसमें क्या है, हम स्पर्म को पकड़ते हैं, वी एक्चुअली कैप्चर वन सिंगल स्पर्म, and we take one single ovum, and we try to पेनिट्रेट इनटू इट. हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे पेनिट्रेट करवाते हैं जबरदस्ती कि भाई तू अंदर जा उसके. So that is called ICSI. So ICSI is a
आईवीएफ, एवरीथिंग इज आईवीएफ। आईवीएफ एक जनरल टर्म है कि भाई मतलब कि आईवीएफ में कोई भी हेल्प नहीं ली जाती, उसमें बस ओवम और स्पर्म को छोड़ दिया जाता है। एक ब्रॉड टर्म है एआरटी के नीचे, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक के नीचे। इक्सी में हम फोर्स करते हैं स्पर्म को कि वी मेक इट पेनिट्रेट एंड देन वी लुक एट द formation of blastocyst after 48 hours, 72 hours, 4 cell, 6 cell, 8 cell, all those stages we wait ki whether ICSI was successful or not. Then it comes to the procedures, which procedures help us take out the sperm from the male, PISA, TISA और micro TISA like we were talking. ये IVF की टेक्निक्स नहीं है, ये स्पर्म्स को लेने की टेक्निक्स हैं, स्पर्म्स को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक्स हैं. वी कैन डू मिल्किंग टेक्निक. हम कई बारी बेसिकली इसको जो एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं या a good endosurgeon is there. He actually looks in the when we use the word TC, that is just a simple testicular extraction. So you just give a nick on the testes and you just take or milk it basically by pressing along the epididymis. You try to milk it and you extract those sperms and you take them in your lab and you examine कि वहां पर sperm दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. दिख रहा है तो आप चाहे आईवीएफ कर दो, चाहे आप इक्सी कर दो. लेकिन जिनका काउंट बहुत कम है, आपको पता है कि भाई एफएसएच इज 20-30 एफएसएच है, क्लाइनफेल्टर्स है, टेस्टिकुलर साइज स्मॉल है, इजैकुलेट में एजोस्पर्मिक है, सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम है, देयर यू यूज ए माइक्रो टीसी, दैट इज माइक्रो इज स्टैंड्स फॉर माइक्रोस्कोप. So again, it is a testicular extraction of the sperm by using a very big microscope, which is on the OT table itself. So there you try to look and search for a spermatozoa on the table itself, and then you try to take it. और जब आप उसको लेते हैं, आप उसको जाके इक्सी कर सकते हैं. तो बेसिक टेक्निक तो आईवीएफ और इक्सी ही है. जो बाकी टेक्निक्स हैं टीसा या माइक्रो टीसा, ये स्पर्म एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं कि हमारा जो मेल फैक्टर है वो कितना अफेक्टेड है कि हमें उससे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. And of course, one very important point, especially for our ART center, there are very big chances of failure of sperm retrieval in such patients. And we generally take their consent for donor IVF, where actually we have already taken the oocytes of the mother, of course, own mother, basically the one who wants to become pregnant. But from the sperm bank, a sperm is always ready, that suppose we fail to retrieve the sperms of the husband by any means, then we can help them conceive the donor sample of the semen. And again, we do IUI for those samples or ICSI, depending upon personal choice or discussion, which we would have had done prior. Yeah. So I hope, Payalji, that answers your question. So IVF is a broad term, and in this, your doctor will tell you how they are going to retrieve the egg or the oocyte. They will tell you how they are going to retrieve the sperm, and also how they are going to mix both together. ये तीनों चीजें बताई जाएंगी. We acknowledge the questions and comments from Dr. Beena Bamal. So, Dr. Beema, each time there is a different login for our 7 p.m. show, but it is available on Facebook and on YouTube both. And I will request our back-end team, Manmeet is there on duty today, to share the KK Med Talks maybe Facebook page with you or the YouTube page if there is one, so that you can log into us quite easily. I also acknowledge the comment from Mr. Pichumani Shivasankaran. So this is actually an English and Hindi mixed kind of a talk show, Mr. Shivashankaran. But we do try. We ensure actually that all the information is given in both languages. And if there is any specific question, do let us know. We'll be happy to answer. Dr. Rajneesh is there with us still. A few more questions, Dr. Rajneesh. We have about 5-6 minutes left. So Sir, Prabhakar Jain ji पूछ रहे हैं, IUI has failed twice. IUI, body mass index is 29. Uh, Count is perfect, 115 million. Testosterone is low, borderline. So, couple of questions. Is that low borderline testosterone linked with the BMI of 29? Will it help if I reduce my weight? And then, secondly, if the IUI has failed, maybe it's a female cause.
Not necessarily. Actually, there is something called idiopathic infertility. Suppose, again, we try to investigate both male factor and female factors, and once you say that my count is normal, I consider you as normal as far as your fertility question is concerned. You can have a low testosterone with a normal count. You can have a low normal testosterone with a normal count. You can have a normal testosterone eventually, which you can repeat again. Like I said in the beginning of my talk, if you were there, that whenever we have to comment on the sperm counts, we should not comment on a single reading of sperm count. That holds true for the testosterone as well. So a single low normal or a low testosterone really does not give us or tell us that this gentleman is having hypogonadism or low testosterone. We should recheck the testosterone at a different time, at a gap of 1 week to 10 days, and we should be able to actually reproduce the reading to really label that gentleman that he is having low testosterone. But a low testosterone level can have a normal sperm count man. So since we are talking to related to fertility here, so obviously uh, uh, if your sperm count is normal, we consider that you do not have as such any cause for not making your female partner pregnant. Now you said that we have tried 2 times IUI, and as I said that then you asked there might be a female factor as well. So of course, again in the beginning I said that both males and females should get themselves investigated. So females, number one, is she ovulating normally or no? I'm sure your gynecologist has seen that she's ovulating normally. That is done by follicular studies, and you can do progesterone levels. There are many ways, but I'm sure that once we rule out that, we say that okay, it has been ruled out, patient is ovulating normally. Second thing is whether tubes are patent or no. It's very important. That again becomes a very important investigation in female infertility approach. So if your tubes are patent and female is ovulating normally, more or less we consider that she is normal. And then now your sperm count is normal, female factor is normal, and you have tried 2 times IUI and still the female partner is not becoming pregnant, we can label the patient to be having idiopathic infertility. So it can be addressed again with the repeat IUI, with the use of density gradient. There are some medias that can be used there. The quality of IUIs can be improved actually by using density gradients, by doing some washing of sperms. We can do that, because there are many things in the sperm which have to be washed. So generally, if we do IUI by washing those infections things where medias are available in the centers, so that can have good results. Despite that, if one fails to become pregnant, I would suggest that ART is one option that somebody can opt for if it fails ultimately. So we can But focus on yes, the low quality. test, Yeah. yeah, yeah, low testosterone can be addressed later on. I mean, it's not linked to your infertility. We should address that issue, why your testosterone is low. Then the link of BMI and those things come into play. And you can focus on the quality of the IUI and also other ways then, because Sure, 115 is actually a good count. A few more questions, Dr. Rajneesh, if you can just answer in one sentence each. sure, Dr. sure. Noor Naga says, what is the sperm count where you will mandatorily advise an IVF? Is there a threshold? Not really, sir. Actually, it is a mutual discussion. Depends multiple things. What is the mother's age? If she's a elderly lady, she's 34, 35. I will never waste my time not guiding her to go for ART. If she's 22, recently married, so there are multiple things. I think so. We should have a collective discussion with the patients. There is no specific Single count. threshold. Yes, sir. Mr. Pratipati Rambabu says, do beta blockers affect sperm count? So theoretically, it is said that beta blockers do cause erectile dysfunction. So I would say, I have yet to see somebody complaining and improving once I stop the beta blockers. But theoretically, it causes at least erectile dysfunction. I'm not aware whether it really affects spermatogenesis in any way. But certainly don't use atenolol. And if you are on atenolol, there has to be a reason for that. Do speak with your
physician, with your cardiologist, if actually atenolol is necessary. That is not considered a blood pressure lowering drug anymore. There are much better options available. Right, Question for Mr. Ram Babu. Again, just one single answer question. What is a sir. sperm bank, Daksa? What Sperm is a banking sperm is bank? Sperm bank is a blood bank. Whatever you know about blood bank, it exactly works like that. Sperm bank basically authorized, the persons, donors have to be authorized. They have to go undergo a few tests. Then they give their samples, semen samples, to the sperm bank, and that sperm bank maintains their secrecy, maintains their vitals, maintains their height, their color. There are few basic phenotypic characters that have to be mandatorily maintained by the sperm bank, because when we are offering sperm banking to a patient, or I mean a donor IUI, when we are offering, so we try to look at the physique and the characters of the father that is eventually going to father a child, and we try to match those characteristics. Matlab, there is nothing. It is basically, you need a liquid nitrogen tank, and in that liquid nitrogen tank, you preserve the semen, whatever has been given by as a ejaculate to you. And there is a way to preserve the semen. There are medias, gradients. There is a way. So once we do that, we can safely bank them in liquid nitrogen. That's what is done generally in banking, but it has to be a registered bank. It cannot be like anybody can do it. It has to be registered with through proper. Now, since ART bill has been passed very recently, there are a lot of issues. I think that it's again a Yeah. long discussion. Sir कह रहे हैं कि एक सेंटेंस में आंसर देना है. तो सेंटेंस भी ना डॉक्टर जी के लंबे लंबे वाले होते हैं. तो बट स्वप्ना जैन जी आपको थैंक यू कर रही हैं. डॉक्टर एन एस शारदा सर, वी एक्नॉलेज योर ब्लेसिंग्स एंड also your question. Perhaps we can take polycystic ovary syndrome later on in a separate section. And there are so many questions actually that have come up today. But one question from Dr. Chetwal, madam. How long can the sperm bank preserve semen? How many years? Oh, it can preserve for years. I mean, there is the life of semen is good if it is preserved accurately. Hmm. 5 years, So like we can easily preserve for 5 years, 5 years, 10 years actually. women are also preserving their eggs. Let us say you have a film actress who doesn't want to become pregnant right now because of her career, but she knows that the biological clock is ticking, so she might get her oocytes, her eggs preserved. Oocyte freezing is done. Yes, sir. And similarly for men, for whatever reason, you don't want to become a father right now, later on, and maybe later on you have to go for some radiotherapy, some cancer treatment. Maybe you have to go for war. Then men also give their sperm and they get it preserved so that they can use it later on. Dr. Rajneesh, we've had such an interesting discussion and so many aspects we've learned about infertility. We've learned that there are different reasons for male infertility. You focus mostly upon the lifestyle disorders like obesity. You've also talked of the endocrine disorders like hypothyroidism, hyperthyroidism, diabetes. इसके अलावा आपने पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की भी बात की. फिर हमने लोकल फैक्टर्स की बात की. तो एक तो हमने ये लेसन सीखा कि मेल इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस हैं. देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर मेल इनफर्टिलिटी. वी हैव टू फाइंड द रीजन. वंस वी फाइंड द रीजन, देन ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू ट्रीट इट. ट्रीटमेंट के लिए फिर आपने हमें बताया कि अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट हैं. और जब हम एआरटी वालों के पास जाते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वालों के पास, तो ये भी हमें अलग अलग तरीके बताएंगे फॉर स्पर्म रिट्रीवल, फॉर एग रिट्रीवल एंड ऑल्सो फॉर मिक्सिंग देम टुगेदर. With this information now, we are so empowered actually, and all our friends who are listening, they can go and have a more meaningful discussion with their doctors. And finally, like you said, it's a collective decision, it's a shared decision. डॉक्टर एन एस शारदा सर पूछ रहे हैं, इज देयर एनी रूल फॉर एज ऑफ स्पर्म डोनर? कोई मैक्सिमम एज, कोई मिनिमम एज, ऐसा कुछ है क्या? I'm sorry, sir. I have no idea. इवन आई डोंट हैव एन आइडिया, बट आई एम क्वाइट श्योर दैट यू हैव टू राइट द एज. तो वो भी रखेगा आई आपका थिंक जो. सर, ये तो देखिए, देर इज एविडेंस. मतलब मुझे रूल क्या है, ART लॉ क्या कहता है, वो मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ. आई एम सॉरी. But with, of course, age, the quality of sperms goes down. So that is for sure that if somebody aged want to donate sperms, I think the quality will be compromised, and the sample might be rejected.
एक मूवी भी थी इस पे, हिंदी मूवी, विकी डोनर सर। विकी डोनर, यस। वो तो बंदा यंग था सर। रजनीश, आपने एक सेंटेंस में जवाब दे दिया, एक लफ्ज में दे दिया। So ठीक है सर। on this note, let's celebrate and let's thank you for sharing your valuable time and experience with us. We acknowledge and we thank you for that. Manmeet, could we show थैंक a यू। certificate of appreciation for Dr. Rajneesh, please? So thank you very much, थैंक Dr. यू सर। Rajneesh. थैंक यू सो मच सर, इट सब वाज लोग रियली आपको थैंक यू नाइस कर टू। रहे हैं। हाँ, हमारे साथ आने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के मेड टॉक रोज होता है और मैं आपके साथ होता हूँ हर सोमवार और वीरवार। इस वीरवार, इस जुमेरात शायद एक रिकॉर्डेड वर्जन प्ले होगा। मेरी भी आजकल क्लासेस चल रही हैं। आई एम स्टडिंग टू बी अ लाइफ कोच, तो कुछ एक क्लासेस हैं जो मुझे मिस करना अलाउड नहीं है। बट अगले सोमवार आपको फिर मिलूंगा एंड वील बी टॉकिंग अबाउट ग्लूकोविजिलेंस ड्यूरिंग द रमजान मंथ। सो वील बी स्पीकिंग अबाउट दैट नेक्स्ट मंडे। एंड 31 तारीख को, अगले वीरवार, हमारा ट्रांसजेंडर हेल्थ पे एक प्रोग्राम होगा, जहाँ पे हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर अक्सा शेख, जो कि खुद ट्रांस वुमन है, एंड शी विल बी शेयरिंग हर एक्सपीरियंस अबाउट ट्रांसजेंडर हेल्थ एंड एडवोकेसी फॉर दैट। तो आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रजनीश को तो थैंक यू करेंगे ही, आप सबको भी। इकट्ठे मिलके, आई फॉर इकट्ठे मिलके, हम भारत को, अफगानिस्तान को, पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल देश और दुनिया बनाते हैं। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर, इट वाज रियली नाइस टू इंटरेक्ट विद यू एंड ऑल आवर फ्रेंड्स हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।